On to the state of Rajasthan, where the widows of 3 Pulwama martyrs were removed from a site outside Congress MLA Sachin Pilot's residence in Jaipur on Friday, where they were observing an indefinite hunger strike seeking jobs for families and other government benefits. Responding to the demands of the widows, Ashok Gehlot had questioned whether it would be appropriate to snatch away the jobs of the children of the martyrs to relatives. Meanwhile, BJP on Friday announced a protest on Saturday after its Rajya Sabha MP Kirori Lal Meena allegedly sustained injuries in a clash with police when he was on his way to meet one of the protesting widows and was also detained later. Now, the protest will be led by State BJP Chief Satish Punia, and it is likely to be joined by Union Minister Gajendra Singh Shekhawat and BJP MP Rajyavardhan Singh Rathore. यहाँ क्यों बैठ गए हैं और क्या चाहते हैं? वो 129 में उठाकर हमारे कार्यकर्ताओं को जंगल में छोड़ना चाहते हैं। वो नौटंकी में नहीं चाहता। इनको लगता है मैंने कानून को हाथ में लिया तो कानून के जो ऑफेंस बनता है उसमें मेरे को गिरफ्तार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने कानून को हाथ में नहीं लिया। अच्छा, आगे कहाँ जाना चाहते थे आप? मैं तो ढूंढ रहा था, पहले तो बालाजी के दर्शन करना चाहता था, उसके बाद वीरांगना को घर जाना चाहता था बालाजी से प्रार्थना करके। ये कि क्रूर मुख्यमंत्री को समझाओ बालाजी महाराज। घर जाने से रोक रहे हैं आपको मिलने से? हाँ, रोक रहे हैं। देख लो, बैरिकेड लगा दी, भारी पुलिस बल है, धक्का मुक्की हुई, आपके सामने हुई। वीरांगना ये कहाँ है? पुलिस ने बताया कहाँ घर पर है? नहीं बता रहे ना, नहीं ले जा रहे ना। अभी वीरांगना इनको कह गए थे कि वीरांगना से मिलाते हैं डॉक्टर साहब को, तो मुकर गए। ये मुझे पकड़ के बंद करना चाहते हैं। मैं छोटा भाई हूँ, 1975 से उनके साथ हूँ। वो हर संघर्ष में उनके साथ रहा हूँ। मैंने उनको अपना खून दिया, मैंने जान दिए, मैंने उसके भाई के साथ रहा हूँ। मैं उसकी परिस्थिति समझता हूँ। वो गरीब दिनहीन के लिए लड़ा है, आज तक लड़ता है, और मैं उसके साथ हूँ। और मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं। ये करे बंद किसको करते हैं? करे हमको मारे, सब घर वालों को मारो, लेकिन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी रहेगी। लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री जी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, आप में दम है तो हमको मार दो। Now, as the protests continue in Jaipur for 11 days, CNN News 18's Mara Shakil spoke to BJP MP Rajyavardhan Singh Rathore. Let's listen in. You did a press conference in which you raised concerns regarding the Pulwama martyrs family in the context of your home state. The latest issue is, of course, of Pulwama martyr's wife, in fact, widow, being manhandled and assaulted by the Rajasthan police because they were demanding their rights. What they were demanding was something that was promised to them. Does it actually put the focus on how the Congress response to the martyr and armed forces in general has been? What do you really want from the Ashok Gehlot government? See, you have to see the issue in its entirety. There are certain rules, regulations for those killed in action, for as you usually call martyrs. There's central government that gives them benefit. There's the armed forces. Then there's the state government that gives them benefits. Now, the other issue is, especially when Pulwama happened, emotions were very high. The video, if you would please show to the people, is of the time when the last rites were happening of one of the martyrs. And that's where the chief minister, then chief minister, the present chief minister, had sent his emissaries, his ministers, to speak to the family. Now, those ministers who were there with the authority of the chief minister promised certain things to the family. Now, either they were plainly lying and giving fake promises, or they didn't even know what they were talking about. So the chief minister is responsible for things that were promised to the family then. Now for the chief minister to say, look, here are the rules and regulations, is incorrect, because something was promised to the families at that point of time. Mind you, at that point of time, the elections were round the corner, and therefore it becomes very, very convenient for Congress
to give fake promises, false promises, exactly what they did with the unemployed youth, to say that hum aapko berojgari bhatta denge, exactly what they did for the kisan, saying that in 10 days your loans will be waived off. I mean, everything is a farce for Congress. And now, so these two things, and now just the plain attitude of how do you treat a martyr's family? How do you treat a family of the person killed in action? Are you going to mistreat them on the roads? Are you going to drag them on the roads? Are you going to beat them with sticks? Are you going to use your police force for them? If you have the might, why don't you use your police force on those who are breaking law and order? There's enough number of cases in Rajasthan where people are taking the law in their own hands. Why is the police not acting there? You want to use your police might on these people? And tell me, why can't the chief minister just plain simply meet these families? Is he so scared of these families of the martyrs? Because perhaps he's scared because he's promised them something that he cannot deliver. And he's promised them on the pretext of the elections. Now Chief Minister goes to Delhi regularly for that National Herald case, it's a 5,000 crore scam. He goes there, but he doesn't have the time to meet the families. One of the Pulwama martyrs' daughter, Reena Meena, spoke to CNN News 18's managing editor Zaka Jacob on what her family is demanding from the Rajasthan government. Listen in. आप और आपके माँ पिछले 10-11 दिन से आप सड़क पे बैठे हैं मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर। क्या है आपके मेन मांग और अभी तक क्या कुछ आश्वासन दिए गए हैं सरकार की तरफ से कि आपकी मांगे पूरे किए जाएंगे? सर देखो, हमारी ऐसी कोई शिकायत नहीं है जो सरकार पूरी नहीं कर सकती। हमारे पैकेज के जो हमें पैकेज दिया गया था उसके अनुसार ही हमारी जो शर्तें हैं। पहले मांग हमारी थी जो अदालत चौराहे की थी, वो सरकार जो नेता हमारे आश्वासन देके गए थे, वादे करके गए थे, वही है। वो रही बात स्कूल की, तो स्कूल का नामकरण भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इनके लिए। और 1 किलोमीटर का रोड है जो हमारे कच्चा है घर के लिए वहां गाँव से, तो वो भी कोई ज्यादा बड़ा रोड नहीं है जाके जो सरकार नहीं कर सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री और उनके बाकी मंत्री जो हैं उनका कहना ये है कि आपका एक मांग जो है मूर्ति लगाना, उनका मानना ये है कि ऑलरेडी आपके पिताजी के नाम से 2 मूर्तियां लग चुके हैं, तीसरा और लगाने में मतलब दिक्कत होगी। क्या ये सच है कि 2 मूर्तियां ऑलरेडी लग चुकी हैं? जी सर, 2 मूर्ति लग चुकी है, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लगती है। ये एक तो ओमजी बिरला जी जो सांसद है उन्होंने खुद के पर्सनल से शहीद स्मारक पे लगाई है, और जो एक उन्होंने हमारे विधायक साहब ने लगाई है वो गोरदा कॉलेज में लगाई है, वो उसकी हमारी कोई मांग नहीं थी। उन्होंने जबरन वहां लगाई है, उनकी इच्छा से लगाई है। वो हमारी शुरू से ही मांग अदालत चौराहे पे थी और अभी आखिरी तक वही रहेगी।